D-Day for Pakistan Prime Minister Imran Khan. The Pakistan Prime Minister will be facing a no-confidence motion in the Assembly today, and the number game is not in the favour of Captain Khan. In Pakistan's 342-seat parliament, party needs 172 votes to form the government. Opposition United has 177. Imran Khan and allies have 164. A no-confidence motion was dismissed earlier by the Speaker in the Pakistan Assembly. The Supreme Court of Pakistan has quashed the Deputy Speaker's decision to dissolve the Assembly, saying it is unconstitutional. Imran Khan has ruled out the possibility of his resignation, saying he is going to play till the last ball. The numbers are stacked against him, but Imran Khan is not walking from the crease yet. On the eve of the vote of no confidence motion against him, the Pakistan Prime Minister went on the front foot. The PTI chief called for a nationwide protest on Sunday against the opposition that he described as traitors. आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत, अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी है, अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है। ये जो बाहर से इंपोर्ट करके साजिश करके और ज़मीर खरीद के ये ड्रामा जो हो रहा है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है। Pitching himself as the savior of Pakistan, who is being thwarted by external forces, Imran lashed out at the United States. This time, no holds barred. हम अमेरिका को बार बार उनको समझाएं कि हम कोई मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने आपकी हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। Imran repeatedly alleged that there is a global plot to topple his government. अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता, लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा, यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था, तो उसको माफ कर देंगे। Hitting out at the opposition, Imran claimed that lawmakers were being bought to win the numbers game. मैंने कभी इस तरह की चीज किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर नहीं देखी, कभी सुना भी नहीं है। ना कोई सोच सकता किसी को खरीदने का, ना कोई अपने आप को अपना ज़मीर बेचने का सोच सकता है, क्योंकि माशरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जो लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अगर रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं। His fate almost sealed. Imran reached out to the people of Pakistan. मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। The former cricketer knows he would not be able to chase down the target this time. He is already preparing for the next face-off. Imran believes the pitch favors him and he can extract the right amount of swing to win the test once again. Bureau Report, India Today. In a 40-minute address, Imran Khan praised India on multiple occasions. From India's independent foreign policy to its free and fair elections, Imran Khan showed the mirror to the opposition in his country, quoting India's example. हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की जुर्रत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। Singular praise for India from a beleaguered, cornered Imran Khan.
addressing his nation, possibly for the last time as Prime Minister of Pakistan. In a 33-minute speech, Imran, who touched upon all the familiar tropes that have riddled his many recent speeches, chose to invoke India repeatedly and always in glowing terms. Riding a narrative of foreign conspiracy against his government, he singled India's independent foreign policy for singular praise. यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? This isn't the first time Imran Khan is praising India. On March 21st, before the no trust implosion loomed on the horizon, he had similarly praised India and come in for massive criticism. साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। Practically painting his country a banana republic, Imran Khan also used India's use of electronic voting machines as an example of democracy in motion, decrying how his recommendation of their use in Pakistan had been repeatedly blocked. इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो ईवीएम मशीन है जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। The rapid-fire praise for India was ironically one of the most notable themes in the 33-minute speech. मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। While the politician in Imran was clearly invoking India, Pakistan's touchy topic number one, for dramatic effect, it's likely that part of Imran's praise sprung from genuine admiration. Imran Khan's praise is also affirmation from a so-called adversary nation of India's rise in a region that's been sinking and in breakdown mode over the last 2 years. A country whose economy isn't collapsing, and a country whose navigation of the geopolitical boiling pot post-Ukraine is the envy of many. Imran has had an old India connection thanks to cricket. Maybe some of that bubbled to the surface on Friday night too. Bureau Report, India Today. Prime Minister Imran Khan addressed the nation late Friday on the eve of the controversial no-confidence vote that is to be held today. The Prime Minister cited the example of India as a self-respecting nation, which he claimed no world power could dictate terms to. Listen in. मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मुल्क के मफादात के लिए, अपनी कौम के लिए, हमारे जो लोग हैं 22 करोड़ लोग, इनके फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और वो फॉरेन पॉलिसी वो है जो हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें। हिंदुस्तान को देख लें,
इतनी किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की जुर्रत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो ईवीएम मशीन है जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। हमने तो इसलिए लेके आए हैं। मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये ईवीएम मशीन्स इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है। और दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है। वो आज अपना पैसा बंद कर दे तो हम बैंकक्रप्ट हैं। वो जो बेचारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, क्या आप क्यों नहीं उनको वोटिंग राइट देना चाहते? उनके लिए हमने आई वोटिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो इन्होंने वो ख़त्म करनी है ये। और फिर इन्होंने पूरी गेम तैयार करके ताकि सारे अपने नीचे लोग लग जाए, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने इनके अपने हैं वो लगा के फिर मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन में जाना है। The man who led Pakistan to its maiden World Cup victory, Imran Khan, was to lead the country to its new avatar. At least that is what Pakistan's voters hoped in 2018. But in the last 3.5 years since Imran Khan became the Prime Minister, much has changed. Of the many hats that he donned in his life so far, Imran Khan, the Prime Minister, has been the highest point and now perhaps his lowest. On the day Russian President Vladimir Putin ordered his troops to march into Ukraine, he had a visitor. The Pakistan Prime Minister Imran Khan came calling. For the first time in 23 years, a Prime Minister from Pakistan had paid a visit to the Kremlin. What a time I've come, so much excitement. The scheduled meeting was for 1 hour, but it stretched to 3. It was the beginning of Putin's Russia being cornered by the Western powers. And Pakistan Prime Minister Imran Khan's visit turned out to be a show of solidarity. It served both parties, because back home in Pakistan, Imran Khan too was being cornered politically by a united opposition. ये नए पाकिस्तान की शुरुआत है, जिस हमारे नए पाकिस्तान में बड़े बड़े डाकू अब से असेंबलियों में नहीं जाएंगे, वजीर नहीं बनेंगे, वजीर आजम नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे. The man who came to power promising a Naya Pakistan or a new Pakistan, halfway into his term as the 22nd Prime Minister, is facing removal. Pakistan's economy is in deep crisis. The pandemic has not helped. And the prosecution of opposition leaders added to Imran Khan's dwindling popularity. पुलिस के थ्रू उन्होंने पार्लिमानी लॉजेस पे हमला करके शो ऑफ फोर्स किया, और जो धमकी खान साहब 27 फरवरी का दे रहे हैं कि अगर कोई मेंबर ने अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है तो उनके कारकुन के बीच से जाना पड़ेगा, वो भी एक थ्रेट है यूज ऑफ फोर्स का. The Prime Minister of Pakistan responded with his own jibes. गवर्नमेंट बचाने के लिए ये जो थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है. जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं कि जनाब हम कोई खास अल्लाह के मखलूक हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, इनको कोई खास ऐसी मखलूक है कि इनको सब कुछ माफ हो जाना चाहिए. Cornered at home, Imran Khan showed a brave face to the world. At the recent Organization of Islamic Cooperation meet held in Islamabad, Imran Khan urged leaders of the Islamic nations to mediate in the war in Ukraine.
may I suggest that the OIC, during its discussions, the foreign ministers, we should think about how we, represent 1.5 billion people, how we can mediate, how we can bring about a ceasefire, how we can try and put an end to the conflict. I'm going to meet His Excellency Wang Yi after this, and I want to discuss how maybe OIC along with China, how we can all step in and try to stop this conflict, which is going to have, if it keeps going the way it is, it will have great consequences for the rest of the world. But however much Imran Khan puts up a brave face looking outwards, inwards at home, the rallies against him only keep growing. Because just like in a jungle, in politics too, the opponents have smelt blood. And the opposition parties of Pakistan are not going to let up till Imran Khan's fate gets decided on the floor of the House.